हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर केशव भजान का साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सेंचुरी प्लाईवुड इंडिया लिमिटेड के। आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। आपसे यही जानना चाहेंगे, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, जो आपकी उम्मीदें थी क्या वो पूरी हुई? आपको लगता है कि ये बजट ऐसा है जो न सिर्फ इंडस्ट्री को बल्कि आम लोगों को भी बड़ी राहत देगा? धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। मुझे लगता है कि एक बहुत बढ़िया बजट है। हमारी ये उम्मीद थी कि गवर्नमेंट ज़्यादा पॉपुलिस्ट मेजर नहीं लेके लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस करे, और इस बजट में बिल्कुल वही हुआ है। गवर्नमेंट ने 10 लाख करोड़ की एक रकम इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर लगाई है, विच आई थिंक इज द बेस्ट पॉसिबल स्टेप। ये 1 साल या 2 साल के लिए नहीं है, ये स्टेप इंडिया को $10 ट्रिलियन इकोनॉमी में ले जाने के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करता है। सेकेंडली, हमारे सेक्टर से रिलेटेड प्रधानमंत्री आवास योजना पे भी 60% से ऊपर गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर बढ़ाया है, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। ये एक स्टेप है जो हमारी इंडस्ट्री को और पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को बहुत मदद करेगी। लास्टली, जो इनकम टैक्स स्लैब उन्होंने चेंज किए हैं, इससे कुछ डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर के हाथ में बढ़ना चाहिए, जिससे वापस सारे इंडस्ट्रीज को फायदा होगा। जो आवास योजना का आप जिक्र कर रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, ये एक बड़ी योजना है केंद्र सरकार की, काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इसमें ये वादा किया गया है कि देश में जो है लोग उनके सिर पर पक्की छत हो। ये एक बहुत बड़ी योजना है और 66% का इसमें इजाफा किया गया। इसके जो बजट आवंटन है उसमें ये भी एक बहुत बड़ी रकम है, 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर का आवंटन इसमें अब तक करने की बात कही गई है। तो आपको लगता है कि ये एक ऐसी योजना है और एक ऐसी घोषणा है जिसके चलते जो पूरा हाउसिंग सेक्टर है उसको इससे फायदा मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई बात करता है बेसिक नेसेसिटी की, तो रोटी, कपड़ा और मकान, आई थिंक अब इंडिया इस पॉइंट पे पा गई है कि हमें रोटी और कपड़े की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट फोकस आएगा हाउसिंग के ऊपर। और जैसे आपने देखा है यूएस की इकॉनमी या चाइना की इकॉनमी, जो पूरा ग्रोथ साइकिल था इनका, ये स्टार्ट हुआ था हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पुश के साथ। तो अब गवर्नमेंट जब इस पे ध्यान दे रही है, इस सेक्टर पे फोकस कर रही है, मैं फुल्ली कॉन्फिडेंट हूँ कि आगे जाके इंडियन इकॉनमी इससे अधिक पेस पे ही ग्रो करेगी और ये ग्रोथ सालों साल बढ़ते जाएगी। जी। और दूसरे कई सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें कि जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, 10 लाख करोड़ करने की बात अब वित्त मंत्री ने अपने बजट में कही है। इससे पहले भी सरकार का जो फोकस है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासतौर से रहा है। हमने देखा कि कई बड़ी घोषणाएं पिछले बजट में की गई थी और अब 10 लाख करोड़ इसको पहुंचाना, इसे आप किस तरह से देखते हैं? मैं इसे बहुत पॉजिटिवली देखता हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना इकोनॉमी का ग्रो करना संभव नहीं है। बस एक ही चीज मैं चाहूंगा कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर में लॉजिस्टिक के ऊपर फोकस किया जाए, क्योंकि अभी भी इंडिया में लॉजिस्टिक कॉस्ट, अगर हम अमेरिका से कंपेयर करें, चाइना से कंपेयर करें, बांग्लादेश से कंपेयर करें, काफी हाई है। और इसी वजह से शायद कभी कभार हम एक्सपोर्ट्स में इतने कंपेटिटिव नहीं रहते हैं जैसे कि बाकी प्लेयर्स हैं। तो अगर इसमें से कुछ अमाउंट, जैसे रेलवे बजट बढ़ाया गया है, वैसे ही अगर कुछ अमाउंट डेडिकेटेडली इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर रखा जाए, तो आई थिंक हमें लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा मिलेगा। तो इसी दिशा में अगर हम बात करें बजट से हट करके, जो गति शक्ति योजना है केंद्र सरकार की, वो इंफ्रास्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स को लेकर के ही है, और इसको आप किस तरह से देखते हैं? गति शक्ति, आपको लगता है कि ये इस सेक्टर को एक बड़ा बूस्ट दे सकती है? बिल्कुल। देखिए, बांग्लादेश के अंदर आज के दिन जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ज्यादातर रिवराइन रूट से ही होता है, और उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इंडिया के कंपैरिजन में काफी कम है। तो अगर ये गति शक्ति एंड whether it is railways, whether it is rivers, whether it is any other route, अगर यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, अगर यहाँ पे गवर्नमेंट सालों साल इन्वेस्ट करे, तो हमारी जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो डेफिनेटली गिरेगी, और इससे इंडस्ट्री एज अ होल को बहुत बेनिफिट मिलेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भजान का साहब, इस तमाम जानकारी के लिए, इस पर अपनी खास राय देने के लिए। आज का जो बजट आया इस पर क्या आपकी जो उम्मीदें थी उस पर कितने हद तक वो खरी उतरी हैं? और जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, आपको बता दें कि अगले साल 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है, और जिस तरह की बात अभी आपने हमारे मेहमान से भी सुनी कि लगता है सरकार ने मिडिल क्लास को साधने का दांव चला है इस बजट के जरिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट में करदाताओं को राहत दी गई और इसका खासतौर से बार बार जिक्र भी किया जा रहा है। लेकिन वो लोग जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में नया इनकम टैक्स सिस्टम चुनेंगे, उन्हें ही इसकी राहत मिलने वाली है। पुराने टैक्स सिस्टम में शामिल लोग पहले जैसा ही टैक्स देते रहेंगे। नया टैक्स सिस्टम चुनने वालों के लिए रिबेट की लिमिट 7 लाख रुपए कर दी गई है। पहले आपको बता दें कि ये 5 लाख रुपए थी। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ
कई खास मेहमान हैं, जुड़ भी रहे हैं और आगे भी जुड़ते रहेंगे हमारे साथ। अभी फिलहाल अशोक देसाई जी हैं, पूर्व चीफ कंसल्टेंट वित्त मंत्रालय। देसाई साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। अफाक हुसैन साहब हैं, डायरेक्टर ब्यूरो ऑफ रिसर्च ऑन इंडस्ट्री एंड इकोनॉमिक फंडामेंटल, BRIF, आपको बहुत बहुत स्वागत है। देसाई साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, आप किस तरह से देखते हैं, क्या आपको लगता है कि ये राहत जो दी गई है मिडिल क्लास को, ये काफ़ी है इनकम टैक्स रिलीफ में, और ये दोनों ही रेजिम में देते तो ज़्यादा अच्छा होता, ओल्ड में भी और न्यू में भी? मुझे तो लगता है कि ये मिडिल क्लास को जो कंसेशन दिए हैं उनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये फाइनेंस मिनिस्टर इसलिए बड़ी मशहूर है कि टैक्स ज़्यादा बढ़ाती थी और इन जनरल शी यूज्ड टू एंजॉय मेकिंग पीपल अनहैप्पी। इसलिए ये बजट बड़ा एक्सेप्शनल है कि सब लोगों को खुश करने के लिए ये बजट बनाया है, और इतनी खुशी की कोई ज़रूरत नहीं थी। शायद किसी को इलेक्शन में जीतना है उसको ज़रूरत हो, बाकी इकॉनमी को तो कोई ज़रूरत नहीं थी। बड़ी दिलचस्प टिप्पणी आपने की है, लेकिन लोग तो खुश हैं कि कम से कम उन्हें एक मौका मिला है कि थोड़ा पैसा जेब में आएगा, टैक्स बचेगा। मुझे तो मैं तो खुश हूँ। लेकिन इसलिए एक सीरियस नोट पर सवाल ये कि जब न्यू रेजिम लॉन्च की गई थी इनकम टैक्स की, तो ये कहा गया था कि लोग इसमें आएंगे क्योंकि जो झंझट है रिटर्न भरने का, उसमें कई सारे आपको एग्जाम्पशन से, या आपने जो रिटर्न फाइल जो इन्वेस्टमेंट किया उनको आपको सबूत देने पड़ते हैं, सब करना होता है, वो सब झंझट से आपको मुक्ति मिल जाएगी न्यू टैक्स रेजिम में, और इसीलिए इसको लाया गया था। लेकिन लोग उसमें गए नहीं, और शायद उसको ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए ये कदम उठाना पड़ा है। जो झंझट इनकम टैक्स वालों को करनी हो तो करने के बहुत ही रास्ते हैं, उसमें से शायद 10% रास्ते कम हुए हैं अभी, लेकिन 90% रास्ते अभी भी हैं। अफाक हुसैन, आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि ये जो राहत मिली है इनकम टैक्स में, इसको काफ़ी ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है, बार बार इसको रेखांकित किया जा रहा है कि ये बहुत बड़ा कदम है मिडिल क्लास के लिए। देखिए, अल्टीमेटली जो देश में जो जनता है उनको बजट से यही लेना होता है कि मेरे को टैक्स में कितनी राहत मिल रही है। अल्टीमेटली एक आम आदमी के लिए यही एक टेक अवे होता है। बाकियों के लिए बाकी इंडस्ट्री के बेनिफिट्स वो सब तो अलग होते हैं, तो आम आदमी के लिए तो अब इवेंचुअली एक इंसान की जेब में 1000 रुपये महीने बढ़ेगा, 2000 रुपये महीना बढ़ेगा, वो एक अलग चीज़ है कि वो कितना वो मायने रखता है। बट हाँ, एक इनडायरेक्टली गवर्नमेंट ने जनता को खुश करने की कोशिश की है, रादर देन कि कोई आपने स्कीम दे दी या कोई फ्री भी दे दिया है। एंड इससे एक और चीज़ जो सरकार करने की कोशिश करेगी, इससे जब आपने एक टैक्स की राहत दी है 7 लाख रुपए तक, उससे आपके जो इनकम टैक्स का जो एक वो बेस है, रजिस्ट्रेशंस का बेस है, जो एक टैक्स पेयर का बेस होगा जो रिटर्न फाइल। मैं आपको रोकूंगा क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही है, आइए सीधे वहीं चलते हैं। For state, Sri Pankaj Chaudhary ji and Dr. Bhagwat Karaj ji. On this occasion, we also have with us Finance Secretary Expenditure Dr. TV Somanathan, Secretary Economic Affairs Sri Ajay Seth, Secretary Deepam Sri Tuhin Kant Pandey, Secretary Revenue Sri Sanjay Malhotra, Secretary Financial Services Sri Vivek Joshi, Chief Economic Advisor Sri V. Anant Nageshwaran. I welcome you all to this press conference. Friends, first the Honorable Minister will give her opening remarks. Thereafter, we'll be taking questions from you. Before I request the Honorable Minister, I must request you all to please follow the norm of one organization, one person, one question, please. Don't club too many questions together. That will help us give opportunity to friends. With this, I request Honorable Minister of Finance to proceed. Please begin the opening remarks. Thank you. Good evening, and thank you for being here now after the budget
has been laid on the table of the House. As opening remark, I'll just give a few indications of what has been highlighted in the budget. Broadly, I think the 4 emphasis points are on empowering women, giving a lot more attention to the SHG groups which are in the rural areas, trying to scale them up, give them the opportunity to brand and produce and also market their products in a far more scaled up and professional manner. Emphasis on tourism and training of youth for readying themselves for tourism, specific action for 50 destinations where comprehensive tourism action plans will be introduced. Then what is being called as PM Vikas, looking at Vishwakarma, people who create things, make things out of their hands using tools. In some states they are called Vishwakarmas, in some other states some castes are referred to as Vishwakarma, but what we mean here is to cover all those artisans and craftspeople who do things with their hands using some tools, so not specifically only to some particular communities, but to all who create the soft power of India through their craftsmanship. Then the 4 is green growth, the 4th one, which is in every sphere of life we have policy interventions and enabling provisions made so that India moves fast on the transition to renewable energy, the investments made for hydrogen mission, renewable energy transitional facilities which we need, natural gas, and also looking at biogas, also evacuation of power from renewable energy sources located in Ladakh to the rest of the country. So those are 4 highlights which I'd like you to go back to see the scale in which we are approaching these issues and the impact that it will have on large sections of India's population. Then, of course, I gave 7 priorities, which began with talking about inclusive growth, investments in infrastructure, also reaching the last mile so that those who are still left without a house or a sanitary facility or a road which is reaching them, and so on. So the last mile, reaching the last mile for those who desperately need that kind of a link are all being covered. Then we are also looking at a very futuristic fintech financial sector for which we have brought in some specific ideas. We are looking at also improving the industrialization of this country where people will be trained for Industrial Revolution 4.0, which means they're going to be trained for AI, IoT, using Web3 in other words. So training manpower to ready themselves for industries which are rapidly becoming industrialized in the Web3 context. Then digital economy, unleashing the digital power of India in various walks of life, setting up an artificial intelligence research center, center for excellence. So all these are in part A. There's a lot of increase in the agriculture credit availability, 20 lakhs being made available for agriculture credit. Also a sub-scheme under the PM Matsya Sampada Yojana, making sure that people living in the coastal areas are going to benefit from it, fishermen are going to benefit from it. Now, if largely the Part A has looked at these, Part B has aimed at rationalizing the customs duties, also making sure personal income tax, after a very long time, has had substantial changes which will benefit the middle class. And also because this country has been waiting for direct taxation to be simplified, also waiting for
direct taxation to be a lot more easy in compliance, and therefore the new taxation regime that we brought in for direct taxation 2-3 years ago has now got greater incentives, greater attraction, so that people can unhesitatingly move from the old to the new. Of course, we are not compelling anybody. Those who want to remain in old can still remain there for enough justifications that they can have. But the new one obviously is now attractive because it gives greater rebate. It also provides for a simplified and smaller slabs, lower rates of taxation, and also slabs which are nicely broken down. So with all this, I think the budget, I've not gone into specifics, but I thought as an opening remark, this much will be sufficient to say this is a budget which is beautifully balanced. Both growth considerations, because the capital investment has never before seen double-digit investment announcements. 10 lakh crore, which includes 1.3 lakh crores being given to states, is going to give a big leg up for capital investment from government. So the balancing that I'm talking about is looking at public sector investments, continuing that good tradition of capital investment in infrastructure, and also attending to MSMEs, because they are the engine of growth. We've given them relief, we have also given them new access, we have extended and widened the emergency credit liquidity guarantee scheme, also given them back their securities, 95% of it, even if they fail to deliver on contractual promises which were during the COVID pandemic. So the balancing is, one, we could sustain the capital infrastructure expenditure from the government, simultaneously in the private sector give a lot of push and impetus for the MSME, and not forgetting the individuals, the middle class individuals who needed that kind of a tax breaks and relief through taxation. So the large macroeconomic considerations have also been kept in mind. The fiscal consolidation has not been kept in the back burner. We've attended to it. We are respecting the glide path we gave ourselves 2 budgets ago. 6.4 this year fiscal deficit, and the forthcoming year for which the budget is presented now, 5.9% fiscal deficit. So broadly, I leave it at this. I suppose when you ask questions, we can answer the rest. Thank you. Thank you for coming here today. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Shishir here from Hindu Business Line. Ma'am, my question is that when there is an announcement for 7 lakh rupees under new tax regime, that will no tax to be paid, and then you are talking about rejigging the new tax regime, does this mean that this is the end of exemptions for various incentives, exemptions for investment and savings? Well, I've already addressed this, I think. We want to make the new tax regime, which is without exemptions, attractive enough for people to think that this will be the best option for them because it gives them better rates. It doesn't also make the compliance a burdensome exercise. If rates are so low, you're going to benefit net by paying lesser tax. Even those exemptions that you would have otherwise gained from would have resulted in probably net amount being the same. So we made this a lot more attractive. But if there are people who still think that being in the exemption regime, which is the old regime, benefits them, they're welcome to continue where they want. But yes, the ultimate interest is to make the simpler regime more attractive. And that is why we've come up with this. Ma'am, firstly, many congratulations on that fiscal consolidation, because I keep asking you that question. But the issue today is about people in terms of, there is a big gamble in terms of capital expenditure. When you do that, does it actually trickle down to the people? Does it create jobs? I know you've been doing this for the last 2 years. Are you sure that this will
really trigger of job creation, one, to, money in the hands of the poor people. The second, of course, is about inflation, which again, you, like last year, you haven't really touched about it, but you have had the letter from RBI. Your chief economic advisor yesterday says we are in uncertain times, but we hope that it will be under the check of 4 to 6%, hopefully the lower band of RBI. What is your answer to both these points? First of all, on the inflation, I think, yeah, you're right in saying RBI wrote a letter and what. But in the meanwhile, you've seen inflation come down, both the CPI and WPI. Action is being taken by the government. We take inflation-related steps as and when things develop in the ground and in response to it. And that has borne result. So inflation is not something which we are looking the other way while it is changing up and down. We have kept attending to it, and as a result, you find the result. On fiscal consolidation, you asked me the question, and I've already explained that we have attended to it with all earnestness, having respected the glide path we gave ourselves earlier. Jobs. Yeah. See, first of all, I find it a bit odd you may want to ask this question like this. Capital expenditure. I would have appreciated if you asked me, you said something in the BE, but you have not really exhausted what you put forth. You have not really used it in the ground. It is unfulfilled in the sense targets are not achieved. I would have been happy to answer if that were to be the case. But you're asking me a question about, in the sense you are implying that we have fully utilized what has been kept for capital investment. Therefore, it makes me feel odd that you're asking a question of actually have jobs been created or not. When projects are undertaken and money is utilized, and that it is utilized is coming through from the budget statement, how would the projects get completed without manpower, without jobs? Not all projects can be completed, even 1%, without human intervention. So obviously jobs are happening in the ground. So ma'am, I want to ask you, ma'am here. Ma'am, I want to ask you what percentage of taxpayers had moved to the new tax regime in the last assessment year? And is there a number that you expect, 50%, 60%, whatever? And number two, ma'am, there's a specific mention for expenditure towards MSMEs. Now, is there an estimate of how much, what was the dues that companies had claimed as expenditure and which has not actually been paid to the MSMEs? Sanjay, you want to answer on? On your second question, that is on the MSMEs, well, we don't have that data. Certainly we don't have that data. And it's not, I mean, we don't take that data from the taxpayers in their returns. So that data we will not have. But certainly, you know, we are all aware of this huge problem of timely payments not being made to the MSMEs. So in that direction, you know, this is certainly a positive step. Coming to your first question on the exemption-less regime, let me say that for companies, the 22% tax regime that we got, 61% of our tax now, the corporate tax, more than 60% is actually coming from the exemption-free tax regime. Individuals' data we will not have, but we are very hopeful that this particular scheme for individual taxpayers, the PIT, I think the majority would prefer, I mean, all of you, if you all do your own calculations, I think majority here would be now wanting to shift irrespective of their incomes and the deductions and exemptions that they claim. They would be finding it more attractive to shift to the new tax regime, majority of them. No?
Go ahead. Ma'am, very good afternoon. Congratulations on a great budget. It's very clean, simple, nicely done. Ma'am, one quick question on capex and one more on petroleum subsidy. Ma'am, your capex for RE is lower actually in terms of the spend as of now. But the target is, greatly stepped up for FY24. So what gives the confidence that it will be all utilized? That capex RE is lower, ma'am. 7.28 versus slightly lower. And a big jump for FY24. So what gives the government the confidence that all of it is going to be utilized and well spent? That's one, ma'am. And second, ma'am, on the petroleum front, the LPG subsidy has been kept pretty low. You had announced certain additional measures last year in May, along with the deep cuts in excise on petrol, diesel. So what happens to those announcements regarding LPG subsidy? They have not been rolled over. And plus, ma'am, there is a demand coming in from oil cores now after LPG losses that you have made good by giving them money. That something needs to be done on fuel also. So would the government consider? The last bit, something has to be done for who? Basically, demand coming in from oil cores in terms of oil marketing companies. Yes, cash compensation. The money for which fuel is now being given is not for that. Not for that, ma'am. So, all of it. So, on your first question on capital expenditure. So, yes, the revised estimates are about 97% or 98% of the budget estimate. Yes, there is a slight deviation. It's mainly on the state capital expenditure, which is falling short of the 1 lakh crore. Actually, the central capital expenditure is going to exceed the budget estimates. State capital expenditure is not expected to reach the 1 lakh crore figure because some portions of the state capital investment scheme have reform conditions. So some states have not been able to meet some of the conditions. Therefore, we expect, I think the figures are there, about 76% of the state capital expenditure scheme is likely to be spent. That's the revised estimate. So the shortfall is actually on the state side, not on the central side. Point number one. What gives you the confidence for next year? I think if you look at the allocations that have been made, they've made in actually the increments are in 4 clear areas. One, railways. The railways has enough projects to absorb the additional capital expenditure. The second is highways. They have adequate projects running to absorb this capital expenditure. The third is states, 30,000 crores. Now, yes, there will always be a challenge, but I think the states are gearing up now. This 2 years of this experiment has helped them to improve their spending capacity. And we are also seeing an uptick in the second half of this year on the state capital expenditure. So I'm reasonably confident that the states will absorb the 1,30,000 that has been provided. And the other big item on the central side is the petroleum capital expenditure, which is for retrofitting of refineries to meet emission standards and pollution standards, and partly for augmenting our strategic reserves. So I'm quite confident that we'll meet the expenditure targets. Please. Tarun Sharma from Z Business. मैम जो डिसइन्वेस्टमेंट का जो टारगेट है वो 65,000 से 50,000 किया है और नेक्स्ट ईयर का 51,000 किया है. तो मैम इससे हम ये समझें कि जो दो गवर्नमेंट बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन होना था और जो 2 इंश्योरेंस कंपनीज का जो प्राइवेटाइजेशन होना था वो अब 2024 के बाद ही संभव हो पाएगा, उससे पहले नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैम जो टारगेट ये कर रहे हैं. दूसरा सवाल मेरा संजय सर से है. जैसा कि आपको विदित है कि डिसइन्वेस्टमेंट तो मार्केट कंडीशंस और कई चीज़ों से निर्भर करता है, तो उस हिसाब से जो प्रैक्टिकल और प्रूडेंट टारगेट है वो रखा गया है. Ma'am, I am Monica from the New Indian Express. Ma'am, what was the need to lower effective tax rate for high income group at this point in time? And also tax collection at source has been increased from 5% to 20% on overseas tour package. So what is the reason behind this massive increase? See, the tour packages are generally taken by people whose effective tax rate is certainly more than 30%. So if we are charging them 20% TDS, I don't think it is high.
we have, our attempt always has been to charge TDS at more or less similar rates, if not exactly the same rates. So that answers your question number one. Question number two on, I think you are referring perhaps to surcharge, which has been reduced. Well, our rates, the highest tax rates in our country were amongst the highest, even more than, some of the developed countries. And so, in any case, it was introduced as an interim measure, and so that has now been reduced, so that the effective tax rate, highest effective tax rate becomes 39%. I'd just like to supplement that. There is a consistent theme, if you see, both on the new tax regime and on the changes that you're seeing in this budget, that the move is towards lower rates but fewer avoidance measures and exemptions. So if you look at high net worth individuals, there are a number of tax avoidance removal measures in this budget, along with the reduction in surcharge. So if you look at market-linked debentures, if you look at very high value insurance policies, and a few other measures. So the marginal rate is coming down, but some of the devices used predominantly by those in that highest marginal tax rate are also being rationalized. So it's not necessarily a net reduction, it is a reduction from a high marginal rate inducing certain avoidance devices to a lower marginal rate with fewer opportunities to avoid. 74, please. One's mind being part of a political party. But consistent with what we believe, we placed our emphasis and priorities on those. And that's what you've seen in the budget. मैडम, मेरा सवाल है आपसे। मैं संजय शर्मा हूं, लोकमत अखबार से। मैडम, आपके बजट में विपक्ष की तरफ से कोई ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं है ये, लेकिन इस बजट से महिलाओं को काफी उम्मीदें थी। घर की महिलाओं को जो महंगाई से पीड़ित थी, रसोई गैस के सिलेंडर के दुगने दामों से पीड़ित थी, कहीं ना कहीं आटे से लेकर के रोटी तक सारी चीजें महंगी हो गई है। तो क्या इससे आपको लगता है कि कुछ इसमें महंगाई पे भी फर्क पड़ेगा और घर की जो रोटी है, जो घर की जो रसोई का जो सामान है, उसमें इस बजट से कुछ फर्क पड़ेगा? गवर्नमेंट का निर्णय को देखे होंगे कि गेहूं के लिए मार्केट में रिलीज करने के लिए आदेश हुआ है, जिससे गेहूं के दाम कम होने के इतना क्लियर इंडिकेशन है, जिससे सीधा घर में रसोई में फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा। सो उसको आप बोलना नहीं है। ये नहीं है कि मैं उसके ऊपर कुछ बजट में नहीं बोले, मगर बजट से बोलने से पहले एक्शन ही हो गया है ना, कि घर की रसोई के लिए गेहूं आटा के लिए मार्केट में रिलीज करने के लिए निर्णय सरकार ऑलरेडी कर चुकी है। एक मिनट। साथ ही साथ जो है महिला जो है वो भी एक परिवार का सदस्य है, तो जो रिलीफ जो इतना टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स में दिया गया है वो भी परिवार के पास में और महिला के पास में आएगा, उसके हाथ में आएगा, जिससे वो अपना घर का खर्चा चला सकती है। सो वो भी एक महिला के लिए, हमें नहीं देखना चाहिए कि महिला के लिए नहीं है, वो भी महिला के लिए एक बेनिफिट है। गेहूं पुरुषों के लिए भी है और महिला के लिए टैक्स भी है। Hi ma'am, Meghna Mittal from ET Now. The fiscal glide path that you have given is 4.5% by 2025-26, which may be considered slightly bold, but does it also indicate your confidence in continuing tax buoyancy in the coming years?
Somanathan has already answered it. Yes, tax buoyancy, as you saw even yesterday, GST collection figures have come. Direct taxation buoyancy is also observed in the current year. That is one thing. I think to the credit of this team, there's been a very robust management of macroeconomics. That certainly bears an impact. So all of us might talk about this particular step or that particular step, but I think together, revenue, expenditure, disinvestment, banking, all of us together have worked in such a way that where you can earn more through tax avoidance related measures, and similarly where you can bring in more people into the tax net, you are taking steps. Similarly, prudent ways of effective expenditure without cutting down expenditure, committed expenditure or other expenditure, are all ways in which you're making money mean more. And for every rupee that you spend, you get a better set of returns. So I think efficient management also has a very big role to play here. I just wanted to add to your question. The estimates in the budget, the revenue estimates in the budget, do not assume a buoyancy greater than 1 for the coming financial year. It assumes a buoyancy of 1. Gross taxes are expected to grow by the same 10.5% by which we have estimated the GDP to grow, which is slightly lower than the figure implied by the economic survey. And therefore, we are assuming only a buoyancy of 1. But if the experience of this year is repeated next year, then it may in fact be more than 1. But we have taken a conservative assumption. And I think the very fact that the commitment to 4.5% was reiterated word by word in this budget gives you an indication that we feel that we have the means and the ability to reach that target by 2025-26. I would also point out that many of our expenditure increases are on discretionary spends. We have kept a very tight lid on the irreducible. तो आप सुन रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को, जो इस समय एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जहां तक महंगाई का प्रश्न है, केंद्र सरकार ने बजट की घोषणा से पहले ही इस बारे में कई कदम उठाए, जिसमें कि बड़ी मात्रा में गेहूं को जारी करना भी शामिल है। वक्त एक ब्रेक का। तो हम बजट पर चर्चा कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी, जिसमें उन्होंने जब पूछा गया कि नया टैक्स स्लैब आया है, इससे क्या फायदा होगा, तो उन्होंने कहा कि ये किसी पर बाध्यकारी नहीं है। जो चाहे वो पुराने टैक्स स्लैब में बने रह सकते हैं, वो अपना खुद का फायदा नुकसान इस पर देख सकते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अजय शंकर जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व सचिव वाणिज्य उद्योग मंत्रालय। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर एनडीटीवी इंडिया में। आप किस तरह से देखते हैं ये जो इनकम टैक्स को लेकर के आज बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है कि नए रेजिम में 7 लाख रुपए तक कोई आपको कर नहीं देना होगा? देखिए, हर बजट के 2 पहलू होते हैं। एक होता है कि आर्थिक सोच से और दूसरा होता है राजनीतिक सोच से। तो ये अगले साल के चुनाव के पहले का सबसे महत्वपूर्ण बजट है और इसमें कोशिश की गई है कि जितने लोग इनकम टैक्स देते हैं सबको कुछ राहत मिल जाए, क्योंकि पिछले 1 साल से महंगाई बढ़ी है, तो इससे उनको कुछ राहत मिलेगी और जो भी राहत मिल रही है उसका स्वागत होगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है आज के बजट का कि इनकम टैक्स देने वाले हर श्रेणी को कुछ राहत मिली है और इस राहत को हमें उस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए कि पिछले 1-1.5 साल से महंगाई बहुत बढ़ी है, तो रियल इनकम है लोगों की कम हुई है महंगाई से, तो इसलिए उसको कुछ हद तक उसमें रिलीफ देने के लिए इनकम टैक्स रेट्स कम किए गए हैं। तो इसका औचित्य भी है और लोग इसका स्वागत भी करेंगे। आपने कहा कि एक राजनीतिक पहलू होता है, एक आर्थिक पहलू होता है किसी भी बजट का। एक पहलू इसमें किसानों की समस्या को लेकर के भी था। आज कई विपक्षी पार्टियों ने यह प्रश्न भी पूछा है कि आखिर किसानों के लिए इसमें कोई बड़ी घोषणा क्यों नहीं की गई। सरकार ने जो वादा किया था कि उनकी आमदनी 5 साल में दोगुनी कर दी जाएगी, उसके बारे में सरकार ने कोई बात अपनी ओर से नहीं कही। किसानों का जहाँ तक प्रश्न है, तो सरकार ने इस बजट में डिजिटल युग के प्रवेश से जो फायदा हो सकता है उसका जिक्र किया है कि हम कृषि क्षेत्र में डिजिटल युग ले आएंगे तेजी से। तो
अगर थ्योरी में हम देखें तो इससे बहुत फर्क पड़ सकता है, क्योंकि हर किसान को अपने मोबाइल फ़ोन पर ये सूचना मिल सकती है कि अगले दिन बारिश क्या होगी, वो अपनी सॉइल की टेस्टिंग करा सकता है, पेस्टिसाइड्स के बारे में ज्ञान ले सकता है। तो संभावना तो बहुत है, लेकिन इसके क्रियान्वयन में चुनौती है, क्योंकि अभी तक हम उतने सफल नहीं हो पाए हैं। और क्योंकि बहुत साल पहले तो इंश्योरेंस भी हमने की व्यवस्था बनाई थी, बट उसमें भी अभी भी चुनौतियां हैं कि उसको पूरी तरह से सफल करें। तो इस बजट से तो लगता है कि सरकार ने जो डिजिटल युग है उस पर भरोसा किया है कि उससे किसानों की आमदनी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। अफाक, आप को क्या लगता है कि ये जो बात किसानों की जा रही है कि कई सारे कदम उठाए गए, डिजिटल दौर में उनको लेकर के जाना, इससे उनकी आमदनी दोगुनी हो सकती है, ये वाकई एक ऐसा कदम है जिससे उनकी हो सकती है, या उनको ज़्यादा और ज़्यादा जो धरातल पर उतर सके इस तरह की मदद की ज़रूरत है, जिसमें कि किसान सम्मान निधि उसको बढ़ाना या फिर उनका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य उसको बढ़ाना, इन सब बातों से उनको मदद मिलेगी? देखिए, डिजिटल जो चीज़ है वो एक लॉन्ग टर्म स्टेप है, उस दिशा में है जिसमें टाइम लगेगा। इसके जो फायदे हमें देखने में टाइम लगेगा, बट एक सही कदम है, सही दिशा में कदम है। लेकिन जहाँ पे आप बात करते हैं कि किसानों की जो आमदनी बढ़ाने का, वो इतनी तेज़ी से इन चीज़ों से आप वो नहीं देख सकते हैं। उसके लिए एमएसपी की बात करें, उसमें चेंज करने की ज़रूरत है। उसके लिए जो हमारा लोकल जो प्रोक्योरमेंट का सिस्टम होता है उसमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा ऑन ग्राउंड, जैसे आज के बजट में भी वेयर हाउसिंग पे फोकस किया गया है, उससे किसानों को फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर वेयर हाउस होगा, स्टोरेज होगी, तो उसको वो अपने हिसाब से जब सही मूल्य उनको मिलेगा उस हिसाब से वो बेच सकते हैं। तो उस पर फोकस करने की भी ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी, बाहर की टेक्नोलॉजी, जो हमारी प्रोडक्शन, हमारी जो फार्मिंग के प्रैक्टिसेस हैं, उसमें इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। सो टेक्नोलॉजी का अपना रोल रहेगा, डिजिटाइजेशन का अपना रोल रहेगा, लेकिन ऑन ग्राउंड जो इम्प्लीमेंटेशन वाली बात है उस पर जोर देने की ज़्यादा ज़रूरत है। जी अजय जी, एक और जो महत्वपूर्ण बात है इसमें बजट में जिसका जिक्र निर्मला सीतारमन ने किया है, बजट घाटे को लेकर के उन्होंने कहा है कि इसका लक्ष्य रखा गया है कि 2025-26 तक इसको 4.6% तक लाना। क्या आपको लगता है ये मुमकिन है आज की तारीख में जिस तरह की टैक्स बायंसी आपको दिख रही है? ये मुमकिन है अगर आर्थिक विकास की गति बढ़ती है और बढ़ी रहती है, क्योंकि पहले हमने देखा है कि आर्थिक विकास का दर अगर 1% बढ़ता है तो टैक्स 1.5% बढ़ता है। जी, तो अगर आर्थिक विकास की गति बढ़ती है और बढ़ती है आगे, तो ये संभव है। लेकिन क्या चुनौती सरकार के सामने रहेगी वो भी देखना है, क्योंकि सरकार अभी तक अपने खर्चे पर थोड़ा नियंत्रण रख रही है। तो अगर वो खर्चे पर नियंत्रण बनाए रखे और आर्थिक विकास की गति बढ़े तो ये संभव है। लेकिन जब उनसे रोजगार के ऊपर सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये बताया कि 10 लाख करोड़ अगर हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि अगर प्रोजेक्ट के लिए पैसा सैंक्शन हो रहा है, प्रोजेक्ट अपने समय पर पूरा हो रहा है, तो बिना मैन पावर के, बिना रोजगार सृजन के तो ये हो नहीं सकता। तो एक तरफ वो कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाने की बात भी हुई है, 10 लाख करोड़ रुपया हुआ है, तो ये किस तरह का संतुलन बनेगा कि एक तरफ आप खर्चों में भी आप कटौती ना करें विकास पर ताकि असर ना पड़े, और दूसरी तरफ अपना बजट घाटा जो है उसको भी बना करके रख सके आंकड़े को? ये रोजगार के जो सृजन का प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के लिए, क्योंकि इसमें स्थिति हर वर्ष और गंभीर होती जा रही है और इसमें एक नए सोच की ज़रूरत है, गुणात्मक परिवर्तन की ज़रूरत है और एक चर्चा की ज़रूरत है जिसमें कि हर क्षेत्र से लोग इसमें बात करें और एक आम सहमति बने कि हम रोजगार के सृजन का दर कैसे बढ़ाएं। अभी तक इसमें हमें कामयाबी जिस ढंग से मिलनी चाहिए थी नहीं मिल पा रही है। तो क्या उपाय हैं जो होने चाहिए? और इसके पीछे अब जैसे मैंने कहीं और कहा था कि अभी तक हमने PLI स्कीम ले आए हैं, तो वो सारी कैपिटल इंटेंसिव हाई टेक्नोलॉजी क्षेत्र की है। तो हमें सोचना चाहिए कि जहां रोजगार बहुत बड़े पैमाने पर मिल सकता है वहां हम क्या करें कि निवेश हो, भारतीय निवेश हो, विदेशी निवेश हो और जिसमें बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन हो। जैसे टेक्सटाइल क्षेत्र देख लीजिए, तो टेक्सटाइल क्षेत्र में हमें कपास का निर्यात नहीं करना चाहिए,
हमें यार्न का निर्यात नहीं करना चाहिए, हमें सिर्फ सिले हुए कपड़ों का निर्यात करना चाहिए, लेकिन वैसा गुणात्मक परिवर्तन नहीं हो रहा है। फिर हमें विदेशों से सिंथेटिक टेक्सटाइल लेकर उसका निर्यात करना चाहिए, कपड़े सिलकर, वो भी हम नहीं कर पा रहे हैं जिस पैमाने पर करना चाहिए। तो जैसे जब WTO खत्म हो रहा था आज से 20 साल पहले, तो उम्मीद थी कि कोटा सिस्टम खत्म होगा और हमारा निर्यात एक्सपोर्ट है वो चीन के बराबर हो जाएगा, लेकिन अभी भी चीन के जो वेजेस हैं वो तो हमसे 5 गुने हो गए हैं, लेकिन टेक्सटाइल में उनका एक्सपोर्ट हमसे 5-6 गुना ज़्यादा है। तो बहुत मौलिक ढंग से इस पर विचार और चर्चा की ज़रूरत है कि हम क्या गुणात्मक परिवर्तन लाएं अपनी नीतियों में, जिसमें कि रोजगार का सृजन उस पैमाने पर हो जिस पैमाने पर देश को ज़रूरत है, आवश्यकता है। और मेरा तो ये भी मानना है कि सामाजिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है, लॉ एंड ऑर्डर भी बनाए रखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि हमारी युवा पीढ़ी की अब आकांक्षाएं बहुत हैं। जी, अफाक आपसे जाते हैं तो यही प्रश्न, रोजगार को लेकर आपको लगता है कि ये बजट उन तमाम सवालों का जवाब देता है जो आज देश के सामने खड़े हैं, खासतौर से विपक्षी पार्टियां जो एक बड़ा मुद्दा बना रही है रोजगार का, महंगाई का, उन तमाम सवालों के जवाब इससे मिलते हैं? देखिए, कोई भी बजट सारे सवालों का जवाब नहीं दे सकता, कोई भी सरकार हो वो बजट ऐसा नहीं। लेकिन आपने रोजगार की बात की, मेरे ख्याल में MSME सेक्टर पे जो फोकस है वो एक कदम है सही दिशा में इसके लिए, क्योंकि हमारे इसकी वो जो कहते हैं बैकबोन है हमारी इकोनॉमी की, MSME और SME सेक्टर ही है, एंड उस पर कुछ कुछ कदम उठाए गए हैं उसमें रोजगार बढ़ने के, क्योंकि हमारा IT सेक्टर पे बहुत फोकस था, हमारा स्किलिंग हो या जॉब क्रिएशन हो, उसमें बहुत नेगेटिविटीज आ रही हैं पिछले कुछ महीनों में, ले ऑफ्स हो रही हैं। सो उस वजह से अब अगला जो हमारा फोकस रह सकता है वो MSME सेक्टर है, वो प्रोडक्शन सेंटर, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है हमारा, उस पर कुछ नीतियां आई हैं। लेकिन उसमें कुछ चीजें, एक होता है 9,000 करोड़ हमने क्रेडिट गारंटी फंड में डाल दिया, लेकिन हमें ये देखने की ज़रूरत है कि MSME यूनिट जो है उसको उसका बेनिफिट लेने में कितनी तकलीफ़ें होती हैं, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, कागज़ क्या दिखाने पड़ते हैं, क्या उसको हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी उन MSME सेक्टर्स की क्या है, उस पर हमें कदम लेने की ज़रूरत है। तब हम इस 9,000 करोड़ का फ़ायदा दे सकते हैं अपने MSME सेक्टर को, वो बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। बजट में तो हम अनाउंसमेंट्स करते हैं, लेकिन उसका जो एक्चुअल फ़ायदा जिसको लेना है, क्या उसके लिए हमने प्रोसेसेस सिंपल रखे हैं, इजी रखें, उस पे फोकस करने की ज़रूरत है, तभी हम इनका लाभ उठा पाएंगे आगे चल के। MSME सेक्टर एक फोकस है जिसमें सही कदम उठाए हमने कुछ प्रोडक्ट में ड्यूटी कम हुई है, कुछ में ड्यूटी बढ़ाई गई है, इसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कि हम प्रोडक्शन इंडिया में कर सकते हैं और उसको हम बाहर फिर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, वो एक सही कदम है। बट यही है कि जो डोमेस्टिक एक वो इंफ्रास्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है, कि इकोसिस्टम देने की ज़रूरत होती है अपनी इंडस्ट्रीज़ को, क्या हम वो दे रहे हैं? अभी हमारे एक गेस्ट्स ने बताया कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी इतनी ज़्यादा है कि हम उसको एक्सपोर्ट में हमारी वो कॉम्पिटिटिवनेस आती ही नहीं है कभी। PM गति शक्ति एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है फर्स्ट माइल लास्ट माइल कनेक्टिविटी पे, फाइनेंस मिनिस्टर ने अभी बताया कि प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं, बहुत हो रहे हैं, लेकिन उनका फायदा क्या हमें मिल रहा है वो सरकार को देखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। रोजगार पर मैं एक बात और कह दूं कि वित्त मंत्री जी ने आज एक संकेत दिया जहां हमें सफलता मिल रही है। तो उन्होंने कहा कि 1 साल में मोबाइल फोन का उत्पादन देश में कितना बढ़ा है और एप्पल कितना निर्यात कर रहा है हमारे देश से। तो वो एक पहला कदम है सही दिशा में, क्योंकि एप्पल जिस तरीके से काम कर रहा है तो वो रोजगार का सृजन बहुत बड़े पैमाने पर कर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजय जी और अफाक हुसैन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए कि आज जो बजट आया है इसके सियासी मायने क्या है और हमारे और आपके लिए इसके क्या मायने हैं। वक्त एक ब्रेक का। सर, रुंगटा स्टील की TMT बार सारे देश में फेमस, लेकिन इस लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप के लिए आपने उन्हें क्यों चुना? स्ट्रॉन्ग, शौक संभाले, जुड़े तो हमेशा साथ दे। तुम मेरे बारे में इतना अच्छा सोचती हो। बेबी, हम रुंगटा स्टील के बारे में बात कर रहे थे। ओह, घर के लिए चुनिए रुंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड है। अरे यार, कहीं नहीं मिल रही है ये वाली दवाई। फोन पे मिलेगी क्या तुम्हें? हाँ जी, मैं लिख के देता हूँ, टाटा 1mg पे ये दवाई जरूर मिल जाएगी। ये लो। मिल गई? हाँ, भरोसेमंद है जी।
टाटा 1MG। आप भी डाउनलोड कर लें जी। क्या चल रहा है? लिविंग रूम में जैकवार लग रहा है। लिविंग रूम में? That was too funny ना। वैसे खन्ना तेरा वो लंदन ट्रिप कैसा था यार? What a fantastic holiday यार। And where were you guys staying? Very close to अपना Big Ben। Moit's cousin stays there. And those Indian restaurants? भाई साहब, जैकवार लाइट्स लग रही है। The largest bath brand in the country now also brings you the magic of light. Jaguar Bath and Lights. बजट पेश होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह बजट वंचितों के लिए है और मजबूत नींव का निर्माण करेगा। अमृत काल का ये पहला बजट विकसित भारत के विराट संकल्प को पूरा करने के लिए एक मजबूत नींव का निर्माण करेगा। ये बजट वंचितों को वरीयता देता है। ये बजट आज की एस्पिरेशनल सोसाइटी, गांव, गरीब, किसान, मध्यम वर्ग, सभी के सपनों को पूरा करेगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला जी और उनकी टीम को इस ऐतिहासिक बजट के लिए बधाई देता हूं।